What is constitution? Constitution is a body of fundamental rules according to which the government of the functions. country is a body of fundamental rules according to the Constitution is government. the framework of consists of the various organs of the government and the mutual relationship. It also defines the rights of the citizens and the relation between the government and its citizens. Okay. तेजा, देखो अभी तुम तो हो ही, अभी ना कोई मीटिंग में एंटर करना चाह रहा है, श्रीजा झा रोल 78130884, उसके बाद बसाक लिखा हुआ BAS के। हाँ मैम, वो ऐसे करता है। क्या मैम निभा मैम के क्लास में भी मेरे नाम से उनको मैसेज कर रहा था कुछ। ये सब क्या हो रहा है? वो तो मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए उसको एंट्री करने से मैंने रुक गई। लास्ट में BAS के भी लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट। मेरा गलत नोट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cite 3 examples to prove that Indian Constitution is quite dynamic. 3 examples that Right to information, right to education, abolition of tribunals. nationalization of bank, reservation for OBC, right to information, right to education. गवर्निंग बॉडी वन बाय वन बोलिए, वैसे लगता है ना, पता है सबको आ रहा है और सबने कर क्या है, और दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका दीजिएगा। बाकी लोग भी, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, ठीक ना। मैं पूछती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं वही क्वेश्चन पूछूंगी। Cite 3 examples to that Indian Constitution is quite dynamic. The examples to prove that Indian Constitution is quite dynamic are abolition of tribunals, right to information, right to education. Next, explain the procedure of amending the Indian Constitution. Ananya Singh. The 3 procedures of amending the Indian Constitution are: first, by the simple majority. The amendment bill should be approved by the majority of the members present on voting in both the houses of the parliament. Second, by special majority. The amendment bill shall have to be approved by both the houses of parliament. First, absolute majority of total membership, and second, 2/3 of the majority of members present and voting. Third, special majority and ratification. To pass the bill, it may be approved by the legislature of at least half of the states. Okay. Same question. Procedure of amending the Constitution. Anvesha. Yes, ma'am. The 3 procedures of amending the Indian Constitution are: by simple majority. The amendment bill should be approved by majority of members present and voting in both the houses of parliament. By special majority. The amendment bill shall have to be approved by both the houses of parliament by absolute majority of total membership and 2/3 majority of members present and voting. And the third is by special majority and ratification. वो भी माइक से बज रहा है, जिसके माइक से आवाज आ रही है वो माइक ऑफ कीजिए। हाँ चलो बोलो। After the bill is passed by special majority, it may be approved by the legislature of at least half of the states.
आज तो बहुत दिगंबर सिंह 9B वो भी आ रहा था, उसे मैं रिमूव की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशिका ठाकुर। अंशिका ठाकुर, why is Indian Federation quite called quite unique? अंशिका ठाकुर, why is, According, हाँ बोलो। accordingly, India has a federal system, but with a difference. Central government, which is also called union government, is so powerful at times. It appears that India is not really a federation but a unitary state. ठीक है। अब रिया कुमारी 10G, इन लोगों का पढ़ाई नहीं हो रहा है क्या 9th-10th का, जो मेरे क्लास में एडमिट हो रहे हैं? क्या हुआ? अच्छा, नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 5 salient feature ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, इसमें जो 4 फीचर बुक में दिए हुए हैं वही बोलना, और एक में बोल देना कि इट इज क्वाइट डायनामिक। ठीक है, कोई भी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक की तरफ मत जाना, क्योंकि उसके लिए अलग क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले से ही बोल के रखती हूँ, इसके आंसर सटीक जो पॉइंट्स बुक में दिए हैं सो ही आप बोलना। चलो बोलो। Unique Constitution. The Constitution of India is a combination of many good points of rural constitution, so it is also known as a unique constitution. The Landiest Constitution. The Constitution of India is divided into 22 parts and has 395 articles and 12 schedules. It takes 2 years, 11 months and 18 days to complete a final draft on 26 November 1948. It was adopted and enforced on January 26, 1950. Written Constitution. Indian Constitution is a written constitution. The concept of written constitution was taken and borrowed by America's constitution. Rigid and flexible constitution. The Constitution of India is a combination of both rigid as well as flexible. The contrary, a flexible constitution is be amended easily. Okay. Right to information. बोलो बोलो। Right to education, reservation of seats in the local cell for women are some examples to prove that Indian constitution is democratic. ओके, नाउ कुशल यादव। कुशल यादव को मैं देखी अभी तुरंत, ही हैज रेज्ड हिज हैंड। कुशल यादव किधर हो? कुशल, आप बोलना चाह रहे थे? हाँ बोलो। यूनिक salient feature of Indian Constitution, बोलो कुशल। कुशल, हाँ why are you taking so much time कुशल? मैम नहीं बोलना था मैम, आपको बोलना नहीं था, तभी मैं बोली। आप थोड़ा बहुत गड़बड़ करते रहते हो कॉपी में, क्यों बेटा ऐसा करते हैं? चलिए पुष्कर, पुष्कर बोलो, पुष्कर। उसके बाद बाकी, हाँ पुष्कर बोलो। Unique Constitution. The Constitution of India is a combination of many good points of several constitutions. The Landiest Constitution. The Constitution of India is divided into 22 parts and has 395 articles and 12 scheduled. It takes 2 years, 11 months and 18 days to complete the final draft on November 26, 1949, but it was adopted on January 26, 1950. Writing Constitution. It is a written constitution. The concept of curriculum circulatory constitution was
was by America's constitution, rapid and flexible. The constitution is a combination of both rigid as well as a flexible country. A flexible constitution be amended easily. Right to information, right to reservation of seats in the local self for women are some examples to prove that Indian constitution is democratic. Okay. मैम Um, लास्ट पॉइंट में डायनामिक होगा कि डेमोक्रेटिक होगा? आई थिंक डायनामिक होगा. डायनामिक में सारी बातें आ जाएंगी Ma'am, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ma'am, वेरी डायनामिक. डायनामिक अपने आप में ही पूरा वर्ड है ना? उसको फिर तुम्हें एक्सप्लेन excuse me, करने ma'am. की जरूरत नहीं. ठीक है? ये डायनामिक इट इज Excuse इन नेचर. एक लाइन में लिख दोगे. ठीक है? अच्छा. अभी अशिम राज को मैं देख रही थी 8G नाम सुना था, कभी इसने क्लास में कुछ रिप्लाई नहीं किया. अशिम राज अभी जस्ट उसने अपना कैमरा Ma'am. किया है. अशिम राज आप कुछ बोलना चाहते हो? अशिम राज. अशिम राज. अच्छा नेक्स्ट बोलो. बारबी. Yes, ma'am. Unique constitution. The constitution of India is a combination of many good points and several conditions. So it is known as the unique constitution, the lengthiest constitution. The constitution of India is divided into 22 parts and 895 articles and 12 schedules. It took 2 years, 11 months, and 18 days to complete the final draft on November 26, 1948, but it was adopted and enforced on January 26, 1950. Written Constitution. Indian Constitution is a written constitution. The concept of this was borrowed by the American Constitution, rigid and flexible. The Constitution of India is a combination of both rigid and as well as flexible. And my fifth point, Indian Constitution is very dynamic. Okay, very good. Next question. All of you ready? Srishti, class 8A, Srishti. India is a sovereign, socialist and democratic republic. Explain. Sovereign. It is because the country is free from all external controls, are free to take our own decisions. No other country dictates policies. Secular. All religions enjoy equal. No distinction is made on grounds of religion. Socialism on one of the national goals to achieve India against exploitation in all and will try to establish economic justice. Our government is elected by the people and the administration of the country is carried by the elected representatives of the people. Democratic the head of the state representative people. The post is not hereditary. Okay. Next. Tanushri. Ma'am, Tanushri. Sovereign. It's because the country is free from all external controls. We are free to take our own decisions. No other country can dictate its
policy or terms to us. Secular. All religions enjoy equal freedom. No discrimination is made on grounds of religions. Socialist. Socialism is one of the national goals to be achieved. Thus, India is against exploitation in all forms and will try to establish economic justice. Democratic. Our government is elected by the people and the administration of the government is carried out by the elected representative of the people. Republic. The India is republic because the head of the state is our president, which is elected by the council of ministers, and the prime minister is elected by the people. The post is not hereditary. Next. Same question. कुशल बोलना चाह रहे हो? चलो सौम्या बोलो, सौम्या। Sovereignty. India is a sovereign state because the country is free from all external controls. We are free to take our own decisions. No other country can dictate its policies and terms to us. India is a socialist state because socialism is one of the national goals to be achieved. India is against exploitation in all forms and will try to establish economic justice. India is a secular state. All religions enjoy equal freedom. No discrimination is made on the grounds of religion. Our government is elected by the people and the administration of the country is carried out by the elected representative of the people. Thus, it is a democratic country. India is a republic because the head of the state, that is, our president of India, is elected from amongst the people. This post is not hereditary. ओके अच्छा, अब इसके यहाँ ये क्वेश्चंस मिलवा देती हूँ आपको, एक तरह से सारा पूछी मैं जो पीछे में है ना। चलो करो, पेज 192 सब लोग निकालिए, पेज 192। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा? The executive is answerable to the parliament, कि there is no relationship between the legislature and executive, कि there is the present president enjoys Executive is answerable to the parliament. Ma'am, the executive is answerable to the parliament. Yes, the executive is answerable to the parliament. Next question, the Constituent Assembly of India consisted of indirectly elected members. Directly elected members. Directly elected members. Next, most of the provision of Indian Constitution can be amended by Special majority. Yes. Freedom of religion makes India a secular state. ठीक है. Which one of the following statements goes against the spirit of federalism in India? The government Ma'am, all options are correct. Points are correct. All points are correct. हाँ, ये तो गलत ही दिया हुआ है, इसमें है ही नहीं गलत। जैसे कि फेडरलिज्म की एक मिनट सुन, पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो, एक बार रिकॉल करने दो, ठीक ना। फेडरेशन मतलब क्या है? फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम क्या है कि पावर इज डिवाइडेड अंडर टू हेड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर क्या है इसमें? सेंटर बहुत स्ट्रांग है, तो गवर्नमेंट एट द सेंटर इज वेरी स्ट्रांग। तुम्हें कई बार साबित किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन
state government because they have more resources, more power, more subjects to make law on it. कई बार बताई हूँ. अच्छा, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. ये भी सही है. पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ये भी सही है. इंडिया हैज रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरलिज्म के, हाँ, तो थर्ड वाला ही तो रॉन्ग होगा. एक तरफ तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को पावर दे देते हैं, सब्जेक्ट्स दे देते हैं कि तुम भाई इस पे कानून बनाओ और तुम उस पे कानून बनाओ. ये तो फेडरल यहाँ तक ठीक है. उसके बावजूद हम सेंटर को ताकतवर कर देते हैं, जो कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट चला जाता है. ये है नंबर सी. सब लोग करेक्शन कर लो. जिसे याद था वो सही है, उसीलिए मैं कही कि एक बार पढ़ लेती हूँ, रिकॉल करूंगी तो याद आ जाएगा. यूं ही पढ़ने से कभी कभी समझ नहीं आती है. देखो, सारे को जब मैं एक्सप्लेन करने लगी तो आप रूपी बात मेरे दिमाग में आ गई कि हाँ, ये बात तो सही लिखा है, बट ये बात फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाती है. तो नंबर 5 का नंबर सी. सब लोग किए करेक्शन. नंबर 5 का नंबर सी करेक्ट आंसर है. मतलब कि ये बात फेडरलिज्म के अगेंस्ट. चलो नेक्स्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ society. Family. India is a vast country with various Physical, culture, and social and cultural diversity. Yes. The Constitution provides a set of rules, principles and laws. Yes. To almost all. England is not a republic because its head of the state is hereditary. Yes, hereditary. Hereditary करना. State of head of the, नहीं एक मिनट, not a republic because its head of the state is king और queen बोल रहे हो. King और queen बोले, क्या बोले? Hereditary. Queen. Ma'am, queen. Head of the state is, Hereditary. यहाँ पे दिए हुए हैं क्या एक लाइन में कहीं पे? यस मैम, दिया हुआ है. दिखाओ तो. मैम वो वाला पेज है ना जहाँ पे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वाला सारा एक्सप्लेन. अच्छा, सोशलिस्ट, हाँ वहाँ पे किस में? रिपब्लिक में. इंग्लैंड इज, हाँ, किंग या स्टेट इज हेरिडिटरी. ओ अच्छा, सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, सब कुछ, तीनों वर्ड सही है. हेरिडिटरी इज भी राइट, किंग भी राइट, क्वीन भी राइट. यू कैन राइट एनी वन ऑप्शन. ठीक, चलो नेक्स्ट. Mohan is a Gujarati but lives in Himachal Pradesh and has a dual citizenship. False. False. Very good. Very good. The President of India has the power to remove any judge of the Supreme Court. False. There are 15 female members in the Constituent Assembly. True. True. A constitution is called rigid or flexible on the basis of procedure for its amendment. True. इंडिया अमेंडमेंट होता है इसलिए फ्लेक्सिबल है, बट अमेंडमेंट के प्रोसीड्योर कई तरह के हैं, बड़ी पेचीदा हैं, सिंपल, स्पेशल एंड रेटिफिकेशन. दैट्स व्हाई इट इज रिजिड. ठीक ना. चल नेक्स्ट है. इंडिया इज ए सॉवरेन एंड सोशलिस्ट स्टेट बट नॉट सेक्युलर. False.
सब कुछ है, सेकुलर तो सबसे पहले ही है ना। हो गया। अब बताओ कल मैं कौन सा रिवीजन करवाऊं? Chapter 17. 17 में अभी करवाए? मैम 11, chapter 11. 17 तो परसों ही करवाई थी है ना? मैम आप 8 बोली थी। 8 बोले थे, ठीक है। 8 और बच क्या गया? 3 और 8, 3 और 8, ठीक है। कल 3 और 8, ठीक। ओके। और यस मैम। सबको पैटर्न याद है? 10 MCQ, 10 2 मार्क्स और 2 5 मार्क्स। ऐसा करते हैं, कल लेने के बाद नेक्स्ट डे मीन्स वेडनेसडे को मैं 2 मार्क्स के 10-12 क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसमें आप सिर्फ 2 पॉइंट्स बोलना। एक रिवीजन करा देती हूँ। उसके बाद मैं 5 मार्क्स के एक दिन रिवीजन करा देती हूँ, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा 1 + 2 + 2, 3 + 2, 4 + 1, 1 + 4, इस तरह के कई कॉम्बिनेशन होंगे। तो इस वीक में थोड़े वो सब प्रैक्टिस हो जाए। बुक के सारे हो गए हैं ताकि हाफ ईयरली एग्जाम आपका परफेक्ट हो। तो फिर ठीक है, एंड करती हूँ। Yes, Oh. ma'am. चलो Thank you, ma'am. चलो बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.